Hi everyone, so we are live and after a long time, I think 2 महीने का गैप हो गया है. मैंने सोचा आपको भी थोड़ा आराम दूं और हम आ रहे हैं इस लाइव सेशन के साथ. दिस इज वी कॉल इट सीजन 2 ऑफ UPSC Essentials लाइव और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज और हमारी तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स दैट वी स्टार्टेड इन दिस past few months. First of all, I am very excited to share this news that our UPSC Essentials magazine, which you have liked, appreciated, and there are so many suggestions to bring certain more changes in it. We are on it and we are up for it, isn't it? Now, आज का जो सेशन है हम बहुत दिनों बाद आ रहे हैं और आपको पता है that you always wanted us to bring more to share more issues, to bring some solutions to the issues. So आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. जी हाँ, बिकॉज प्रीलिम्स एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड दैट इज to be our focus. Not only that, what is more important is, a lot of students wrote to me that in general also how should we read a newspaper, not only from the perspective of examination. And I know from where that is coming because a lot of you understand that it is very important to be an informed citizen, okay, and this reading newspaper as a habit. Now that news is also on digital platforms, so you need to understand news from that perspective also. लेकिन एक एक करके धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है? नहीं, अब आप मुझे ये पहले बताइए कि what are the two important things that a reader, that a loyal reader of a newspaper, be it an examination or otherwise, what are those two important qualities which a newspaper reader should have, which a news information collector or somebody who is interested to know about editorials, opinions, views, issues, वो दो qualities क्या होनी चाहिए वैसे newspaper reader में? ठीक है, अभी आपको पता है इंटरव्यू सीजन चल रहा है तो जनरली इंटरव्यू में समझ लीजिए किसी ने पूछ लिया कि यू गो थ्रू न्यूज सो मच, करंट अफेयर्स यू स्टडी, दो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? ओके, सो एवरीबडी हु इज जॉइनिंग मी ऑन इंस्टाग्राम can message so that my producer can tell me कि वो दो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए while you are reading newspaper. और जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, जो यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू बिफोर हैंड दैट यू विल गेट दिस दिस वीडियो ऑन यूट्यूब आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर. सो दिस विल बी अ रिकॉर्डेड वीडियो, बट लाइव ऑडियंस हमारे इंस्टाग्राम पे जो जुड़ी है तो हम रूबरू आपसे हो रहे हैं फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ इंडियन एक्सप्रेस here in Noida. I am with my producer and my camera person and we are very excited to be here. ओके, सो दो क्वालिटी जो कि आपको एक न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए ड्राइव करती है, दैट इज, एंड नोट इट डाउन समवेयर, क्यूरियोसिटी एंड सिंसियरिटी. ठीक है, और मैं इस विषय पे थोड़ा और बात करूंगा कि हर समय जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ने लगे कि भाई मेंस के लिए क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या है, तो कई बार आप हिडन इंफॉर्मेशन, हिडन व्यू पॉइंट ये आपसे छूट जाता है. एंड देयर इज वेयर एन एग्जामिनर कैन प्ले. So whenever you are looking or whenever you're reading a news or you're looking at a newspaper, remember that you have to be curious to know about something and you have to be sincere in reading what is written there. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि word by word सब पे believe करिए, but take it as an information, form an opinion and view about it, because in your exams or in life in general, people can ask you to critically examine. Mind the keywords, okay? Examine things, have an opinion about it, comment on something, and this newspaper reading as a habit help you in doing it. Okay, so now let's come to a very crucial point which I wanted to discuss with you. और वो जो crucial point है वो ये है कि whenever you are reading the newspaper, आपके एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और हमारी टीम जैसे उसको एनालाइज कर रही है, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ शिफ्ट बिटवीन व्हाट द एग्जामिनर्स वर डूइंग इट अर्लियर एंड व्हाट द एग्जामिनर्स आर डूइंग नाउ. एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल मैं लेता हूं. जैसे कि पहले एक ट्रेंड था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता था.
For example, let's say about there's a conflict in some part of the world. So they will ask you about between which two countries this particular conflict is happening. That is a direct question. That doesn't need any kind of, critical brain application, okay, or a particular analysis. But then there came a change. The change was that they will not ask you directly about that conflict which is happening in some part of the world, but they might ask about the geography of that area. They can ask you the internal geography, external geography, जो कि directly उस topic से related नहीं है, but at the same time you should know about it. Okay, you should know about the things. तब हमारा जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, हमें लगता है ये प्रश्न कहाँ से आया, ये कहाँ से आ गया. Okay, this is where it is called beyond the headlines, going beyond the headlines, reading between the lines, going beyond the headlines, where you have to know things from a 360-degree view, not only of that particular issue, but about its surrounding. जैसे मैंने आपको example लिया about this particular area where conflict is happening. अब आप लोग मुझे बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो UPI यूज करते हैं. ओके, आई एम श्योर अभी जनरल ट्रांजैक्शन में आप लोग सब लोग UPI यूज करते हैं, है ना. बट आपको हमेशा लगता है UPI का क्वेश्चन तो इकोनॉमी से रिलेटेड है. ओके, और कभी कभी आपको लगता है इकोनॉमी हमारे लिए बहुत टफ है तो हम वो नहीं पढ़ते हैं. दिस इज व्हाट जनरल थिंकिंग अबाउट पीपल is these days. Or say for example an issue which is happening with अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो पेटीएम से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको लगता है ये तो मतलब क्या हमारी बैंकिंग के एग्जाम में आ सकता है, यूपीएससी क्यों पूछेगा, या हम क्यों पढ़ें, या छोड़ो ये एरिया हम छोड़ सकते हैं. बट यू डू नॉट रियलाइज दैट सिंस यूपीआई इज समथिंग विच यू आर डूइंग ऑन एन एवरीडे बेसिस, इट्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ. ऑलराइट, और वहां पे आपका फोकस होना चाहिए, केवल न्यूज की हेडलाइंस में नहीं, बट गोइंग बियॉन्ड द हेडलाइन. ठीक है, चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं आज के न्यूज़पेपर को लेकर. अब इस पे मैं आऊंगा, यूपीआई की बात पकड़ के रखना, जस्ट होल्ड ऑन देयर, विल टेक वन क्वेश्चन. So UV is asking when will your magazine be available? Okay, so our magazines are already available. I will talk about it more in detail. In fact, हम अपने 6th issue से आ रहे हैं. मतलब we started in September, October. We have started a monthly magazine. अगर आप Indian Express के subscriber हैं तो आपको वो available रहेगा. You have to go to the Indian Express. वहाँ पे e-paper section में there is this availability of the magazine. लेकिन आपको subscribe करना पड़ेगा. Okay, so you have to pay for it and there is a subscription plan. So उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यूपीएससी हब ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, और वहां पे हम बात इसके बारे में और कर सकते हैं. या Then another question is, some words or sentences are very complex to understand. How to remove that complexity? And on the similar lines, another question is, sometimes the terms of any article seems difficult. How can we remember them? That's very good thing. इसके लिए हमने एक बहुत मतलब हमने फर्स्ट सीजन पे एक वीडियो किया था 4-hour strategy. तो कोई बता सकता है what is that 4-hour strategy? Okay, now there is one particular thing which we are going to restart. हम पिछले साल एक आर्टिकल करते थे key terms of the past week, where we used to discuss key terms of the news in a very simplistic manner and also thinking from the perspective of both prelims and mains. तो आगे पीछे सब कवर करते थे उस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड. तो अगर आप लोग ने मुझे पिछले हफ्ते ज्वाइन किया हो हमारे वेबिनार में, जो मैंने स्पेशली आपके प्रॉब्लम्स को लेने के लिए किया था, उसमें एक रिक्वेस्ट थी कि वी शुड रीस्टार्ट विद दोस की टर्म्स. ठीक है, तो वो हमारा प्लान है. वी विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. तो आई होप ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है. वी विल डू दैट. ऑलराइट, और एक 4-hour स्ट्रैटेजी है टू रीड, रिवाइज, रिटेन एंड रिकॉल. रीड, रिवाइज, रिटेन एंड रिकॉल. उसके लिए आप वो वर्ड लिखिए, उसको यूज में लाइए, फिर उसको रिवाइज करिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है. तो मैं बात कर रहा था यूपीआई की. मैं बात कर रहा था कि जैसे आप प्रीलिम्स के लिए आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मैं
फ्रंट पेज की न्यूज़ की बात नहीं करूंगा, मैं एडिटोरियल पेज की बात नहीं करूंगा। आज हम चलते हैं इकोनॉमी के पेज पे, ओके। और मैं वहां जब आपको ले चलता हूं तो मैं एक छोटी सी न्यूज़ के बारे में बात करता हूं जो कभी कभी आप लोग ओवरलुक कर लेते हैं। ये कोई केवल आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ नहीं मिली होगी, आपको न्यूज़पेपर में भी मिला होगा। तो ये आज का न्यूज़पेपर है एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट विल बी विजिबल टू यू और नॉट, बट आई जस्ट टेक द लिबर्टी टू शो इट सिंस आई हैव इट इन माई हैंड। तो इसमें एक छोटी सी न्यूज़ है, बैंक फेसिंग डिसरप्शन इन यूपीआई सर्विस सेज एनपीसीआई। ठीक है, अब थोड़ा ना जिसने ये न्यूज़ लिखी है या पेस्ट की है इस न्यूज़पेपर में, उसके थोड़े माइंडसेट पे चलते हैं। अब आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से, पहले तो कई लोग ये छोड़ देंगे न्यूज़ की, छोटी सी न्यूज़ है और ये एकदम बॉटम में है उस पेज के, इस पेज के एकदम बॉटम में ये न्यूज़ है, कहीं ऐसा नहीं है कि ये बहुत ऊपर, यू नो, बिकॉज द मेन न्यूज़ ऑन द इकोनॉमी पेपर इज अबाउट पेट्रोनेट एलएनजी कतार एनर्जी एक्सटेंड वाइटल एलएनजी सप्लाई डील बाय अनदर 20 years बियॉन्ड 2028। लेकिन यहां पे एक छोटी सी न्यूज़ है जिसमें यूपीआई का वर्णन है, उसके बारे में बात की गई है, और एनपीसीआई की। अब आपको पूछना चाहिए अपने से कि व्हाट डू आई नो अबाउट एनपीसीआई? एनपीसीआई क्या है? जब आप एक मीनिंगफुल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जहां पे हर एस्पेक्ट की बात की जाती है, तो आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर छोटे से आर्टिकल में आपको कीवर्ड एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एंड आई वांट यू टू गो बैक टू योर न्यूज़पेपर एंड सी दिस। नाउ व्हाट इज एनपीसीआई एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू यूपीआई? In the very fifth or sixth line of this small 2-paragraph ka news, it is mentioned that NPCI, the umbrella organization for operating retail payment and settlement system in the country. ठीक है, ये आपके लिए केवल एक लाइन हो सकती है, but as a somebody who is reporting or writing from a news agency, it becomes a responsibility to to mention and to explain what is this body about. और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है that journalists follow a particular approach which is called 5W1H. This 5W1H approach is a very important approach जो कि मैंने पिछले सीजन में एक पूरा वीडियो किया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और आपने उसको बहुत उसकी प्रशंसा भी की थी, you appreciated it a lot। और वो अप्रोच मैंने कहा था why can't we just bring it in use in our exam preparation or any kind of preparation। जैसे एक बच्चा होता है जो बहुत क्यूरियस होता है, he or she keeps asking क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ओके, they keep on asking this कि क्यों, कहाँ, कब और कैसे। ठीक है, यही क्यूरियोसिटी, this curiosity should be kept in mind while reading a newspaper। और कोई भी आर्टिकल अगर आपका ये जो 5W1H अप्रोच नहीं आंसर कर रहा है, इसका मतलब यू हैव टू गो इन मोर डिटेल थ्रू अदर रिसोर्सेज। लेकिन व्हेन यू रीड इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर, यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ न्यूज़ का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है वो 5W1H अप्रोच फॉलो कर लेता है या उस पर्टिकुलर न्यूज़ में ही रहता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एनसीपीआई और यूपीआई का एक पर्टिकुलर कनेक्शन है, इसीलिए जहां यूपीआई की न्यूज़ है वहां एनसीपीआई मेंशन होगा, देयर विल बी अ मेंशन ऑफ एनसीपीआई। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू कनेक्ट दीज टू थिंग्स, यू शुड। Okay, these two are very connected terms and that is what you have to keep in mind during the prelims। तो वो curiosity मैंने आपको समझाया कि be curious to know why NPCI here with UPI, and that particular news only will answer in 5th or 6th line that what it is। Okay, we have a question and then I'll move to sincerity wala part। Neha Kashyap is asking how to connect GS questions with current affairs। Wonderful, in fact we were just discussing, तो आपके पास लाइव सेशन में आने से पहले we have a discussion with our team where our producer is there and we try to understand that what are the questions which you have already asked। So Neha, if I know remember your name properly, you won't believe that this question was also there through my email students have sent me, that how current affairs drive you to static part of the syllabus। Is that okay? Now मैं यही एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूं, यूपीआई का न्यूज। ठीक है नेहा, प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, यूपीआई का न्यूज है, ठीक है, इट इज अ करंट अफेयर्स न्यूज। व्हाट इज द न्यूज? बैंक डिसरप्शंस इन यूपीआई सर्विसेज, दिस इज द न्यूज।
And then it says NPCI. Now, what is the current affairs part? कि there are some disruptions in the UPI services. तो आपको ये पता होना चाहिए करंट अफेयर्स की क्या डिसरप्शंस हैं, क्यों डिसरप्शंस हैं, इन द सेंस दैट यू विल बी एबल टू आंसर दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द यूपीआईज इवन टुडे, और व्हाट आर द लूप होल्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स देयर. But then you have to go to the static part. You have to understand that why UPI service or how UPI service came up, what have been its challenges, what are the various committees which were formed, how it has progressed, all right, is there something in the budget about it. Then you have to also talk about NPCI. Now, ab dekhiye, NPCI is not the focus of this current affairs news. But since it is connected to UPI, you have to know what is an NPCI, what kind of body it is. Okay, is it say a constitutional body or a statutory body? What kind of a body it is? What is the work culture of it, or what is the what it actually does? ये static part पे हो गया. All right. इसी तरह when you connect it to the economy, okay, digital economy. Okay, so digital economy is a larger static part. So what I want to say is that current and static को आप ऐसे अलग से नहीं पढ़ सकते. You have to see the integration of both. और यही चीज जो है न्यूज में आपको, जब आप एक सिंसियर रीडर होते हैं, तो मैं क्यूरियोसिटी से सिंसियरिटी पे आता हूं, व्हेन यू आर अ सिंसियर रीडर, यू विल सीक दिस कनेक्शन. You will also see this connection, not only seek but also see this connection in the news itself. Alright, तो आपका एक पर्टिकुलर न्यूज जो है वो करंट अफेयर्स से तो स्टार्ट होगा, बट वो स्टैटिक से कनेक्ट होगा. ठीक है, अभी स्टैटिक का एग्जांपल मैं एकदम ही नया लेता हूं, एंड लेट मी जस्ट डिस्क्लोज इट टू यू दैट हमारी जो नई यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन है, उसका एक पर्टिकुलर थीम है अबाउट एन इवेंट विच हैज जस्ट हैपेंड इन आवर कंट्री और विच हैपेंस ऑन अ रेगुलर एवरी ईयर, द रिपब्लिक डे. अब उस पे जो है करंट क्या है, उसमें रिपब्लिक डे में करंट क्या है कि कौन चीफ गेस्ट था, क्या क्या मतलब परेड में कौन कौन सी टैब्लूज आई, ठीक है, व्हाट झांकियां क्या थी फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें. बट व्हाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज आवर रिपब्लिक डे? ओके, फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दैट बिकम्स योर स्टैटिक. तो जब हम न्यूज कवर करते हैं तो हम भी एक एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वी ट्राई टू गिव यू ऑल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. तो जब आप जैसे हमारी मैगजीन पढ़ेंगे या व्हेन यू गो टू यूपीएससी की और यूपीएससी एसेंशियल्स, वी ऑल्सो कीप दैट इन माइंड. ऑलराइट, तो स्टैटिक और करंट का वहां पे एक पर्टिकुलर संगम है. So now when I tell you that 5W1H approach है, यानी what, where, when, who, why and how, okay, ये आपकी केवल इंफॉर्मेशन गैदरिंग का अप्रोच नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी अप्रोच है. अभी जैसे फॉर योर केस, योर प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम इज आंसरिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. That is your problem solving approach. All right. और उस पर्टिकुलर न्यूज में कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड ये केस है, तो उस पर्टिकुलर चीज को, तो इसलिए आपको जो है दोनों का संगम देखना पड़ेगा. तो नेहा, is my question answered? Say yes if it is, or we can go in more detail. Yeah. So I'm asking two questions together. One is Deepraj is asking, what part of the newspaper should I avoid with the UPSC exam perspective? And second is Priyanshi's question, which is microeconomy essential to study? Is it good to read Dawn newspaper for the international relations? Micro what? Microeconomy. Microeconomy, okay. Now here I would like to answer this particular question, these two questions from one major answer to this, okay, in a very crisp way, is that if you're not aware what to study and what not to study, what is the first move when you are preparing for an examination? And that is knowing your syllabus. If you know your syllabus, it will become very easy to read particular news or newspaper or item. Now, the question on microeconomics, if you think that microeconomics is, a part of your syllabus, see past your questions, what questions have been asked. Okay, then take up that particular news. If you think it's not that relevant from your part of syllabus, you should avoid.
I understand that there are parts in the newspaper which you think that it is not important, but what is driving you to this conclusion is very important. Okay, for example, today in the newsroom we were discussing about political news and political speeches. Okay, now election season is going to begin, there will be political speeches. So do we avoid what is going on in the parliament? The answer is no. Listen to the news, read the newspaper, what happens in the parliament. In the course of the discussion, they discuss about certain particular schemes. Some will appreciate, some will criticize. But in the process, you should know what is that scheme. An examiner has an open hand in making a question from a particular news item, which can also be a speech. Okay, similarly, what to avoid in newspaper का भी वही answer है, that you have to link everything to the syllabus. Okay, अगर syllabus में आपको एक validity लगती है कि ये particular news item है और एक particular approach ले लीजिए ना, for example 5W1H approach. If you think that at least 3 of these parameters are satisfying the 5W1H approach in your news, read it. All right. Now, सबका अपने अपने पर्सपेक्टिव भी होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर इज अ कंप्लीट लिटरेरी आर्टिकल, you can use that particular article in your essays, isn't it? The way it is written, the introduction, the conclusion, the quotes become very important in your GS papers. How to introduce something, how to end something, how to enrich your content in your mains answer writing. Okay, I always say that use newspaper as a textbook. It's very good. It's worth giving a lot of time to the newspaper. And now that digital space is so broad and wide that a lot of questions can be formed from articles which are only on online platform and not newspaper. लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आप न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट करिए. ठीक है, लेकिन सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और न्यूज़पेपर से आप पूछिए, ask the newspaper as if you are talking to the journalist who has written that news. That curiosity, and what is that tool? Is the 5W1H approach. पूछो उस आर्टिकल से what, when, where, how. Okay, so that interaction is very important. Alright, एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं. पाकिस्तान में इलेक्शन की बात चल रही है, बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ. अरे भाई, आप तो इंडिया के सिविल सर्वेंट होने वाले हो ना, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, और यू आर एन इंडियन सिटीजन. पूछा है कभी कि इन इलेक्शंस जो इंडियन एक्सप्रेस या न्यूज़पेपर में इतना कवरेज होता है, उससे हमें क्या लेना देना? डिड यू आस्क योरसेल्फ अबाउट दिस थिंग? हैव यू एवर थॉट? द आंसर टू दिस इज it matters a lot to our country. When in a subcontinent there are two important powers, China and India, and their relation with other countries will matter, will have an impact on each other's polity, each other's, economy, each other's society. Your relation in one particular country will be of a particular benefit or loss to the other country. Then elections in different countries become very important. The outcome of the elections. Okay, now India-Maldives relation versus the Maldives-China relation will also impact India-China relation. ठीक है, तो you have to understand, a particular topic from that perspective. लोकेट करो अपने सिलेबस में कि वो कैसे कनेक्टेड है, और यही आइडिया होता है व्हेन एन एडिटोरियल इज रिटन. आप लोग में से कितने लोग जो है राजा मोहन के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं? लुक एट द वे इट इज रिटन. जैसे कि वो आर्टिकल खत्म हो रहा है किसी और कंट्रीज के बारे में, आखिरी 2 पैराग्राफ में इंडिया का पर्सपेक्टिव रहता है. ठीक है, एक्सप्लेन्ड में भी. सो लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. वी हैव अनदर क्वेश्चन. यस, Singh Abhay is asking how can we use the ideas page? Wonderful. The page का जो टाइटल है ना, वही आंसर है. When you are being asked a lot of question in mains, where your opinion, your comment, okay, your critical analysis on a particular issue is asked, they know that कि एक स्टूडेंट जो है वो उसी समय बैठ के कहाँ से आइडियाज लाएगा, नए आइडियाज कहाँ से सजेस्ट करोगे, है ना? सो यू हैव टू लुक एट दैट पेज वेयर एक्सपर्ट्स
from different field share their views which are not hanging in air. It is based on some particular facts, some particular analysis, some observation, some reports. Okay, तो वहाँ के उन basis पे they form an opinion, they form their idea, and that's why it's called ideas page. Where आइडिया पेज में आप देखिए कि केवल एक लाइन पे आंसर्स नहीं, एक लाइन पे आर्टिकल्स नहीं होते हैं. देयर आर डिफरेंट व्यूज. इट्स लाइक अ बुके वेयर एक पर्टिकुलर इशू पे डिफरेंट व्यूज होते हैं और उनको आइडिया पेज पे लाके रखा जाता है. ये होता है आपका 360 डिग्री व्यू ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. The other thing which I personally like about idea page are those quotes. Okay, the quotes which those the experts write, or the quotes which are mentioned on the top of the page. Make a note, use it wisely, and be a smart, intelligent aspirant there. So I hope you have understood. We can do one session on idea page also. In fact, that is one thing which we can do. और बहुत जल्दी there will be a series of articles on how to read newspaper, where I'll take up one page at a time, और वहाँ पे आपको काफी सारे strategies discuss करेंगे. All right. Another question is, does the business page play a critical role in UPSC? Well, I would say that at times when there is a government person, or there's a government organization or a ministry involved in particular thing, of course it plays. Also when I'm not sure if the idea about census and all is very relevant for your examination. I don't think that is very important, but an impact on economy about any particular business deal becomes very important. Especially you should focus when government is involved, okay, or a particular issue is involved. Okay, for example, this Paytm thing. Okay, now you know that there is a news going around the Paytm and its issue. All right, so of course you have to, that is an example which I'm taking. Okay, so you have to understand that what is the issue there. Is that a general problem with UPI, or why the government body is being involved? See the relation between the government and Paytm in general, in particular, and this the whole UPI in particular. तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी. See it wisely as per the syllabus. Yes. Tanu Trivedi is asking, how can we make notes of newspaper and how can we analyze long terms in short time so that to cover basics? Okay, Tanu. So I think this will require an entire session. So thank you for this question. We do have this idea that we have to take a session on notes. Again, of course, this is not a coaching institute, so we will not delve into this in detail. But I can also tell you from the perspective of a news agency, when notes are taken of a particular news item. When a journalist takes notes कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है देश में, वहाँ पे कौन से ऐसे important points हैं जो particular उतने से space में cover होने चाहिए in a newspaper. I was wondering why not this approach can be applied when you as aspirant are reading the newspaper. वही approach रखो. वो कौन से key points हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं या journalist के दिमाग में चलते हैं while they are taking notes on a particular news. ठीक है, तो I think that could be a very innovative way to prepare, that can be a new way to prepare notes for current affairs. So let me see if we can explore it, and definitely we are going to do something about it. Okay, so more questions are invited. I'm open to it. Now let's come back to what I was saying. तो मैं ये कह रहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, अभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. कुछ साल पहले तक ना जब मैं पढ़ाता था या when I was in the business, we used to miss sports news. Okay, we used to leave that sports page altogether. Entertainment पढ़ते थे केवल leisure के लिए, ठीक है, थोड़ा mood change करने के लिए. But I think UPSC has started become so smart in balancing things कि sports पे भी question आने लगा. And I'm talking about UPSC. अभी state civil services की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. State civil services या other examination में these are very pertinent questions. But sports पे question आने लगा. Question on I remember one day we were watching a movie on Ramanujan. Okay, तो आप लोग बता सकते हैं कि mathematician जो रामानुजन थे उस पे एक film बनी थी. Can you remind me that film? Well,
I know the film and I saw it and I really liked it. No matter I don't like the subject of mathematics so much, but I really liked it. So the film, and that film came as a question in the UPSC Prelims examination. Okay, it was an easy question to crack, not just because I saw the film, but anyways. So ये जो connection है, awards, अवार्ड्स जो मिलते हैं, समटाइम्स वी थिंक कि ये जो अवार्ड्स आ रहे हैं या जो अवार्ड्स होते हैं, बुकर प्राइज एंड ऑल दीज थिंग्स, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऑन बुक्स. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. सो जनरली अंडरस्टैंड, यूपीएससी वांट्स टू सेलेक्ट पीपल हु आर नॉट जस्ट हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो स्मार्ट वर्किंग. तभी है ना हमारा एक टैगलाइन चलता है इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी एसेंशियल्स का, एंड दैट इज think smart, work hard, conquer your goal. Hard work is the key, but smart work is also very important. तो ये जो areas हैं इनको भी miss नहीं करना. तो अभी UPSC ने क्या करते हैं कि they mix all the kind of things. Okay, they will bring analytical aspect between the lines, beyond the headlines वाले भी, and then they will ask you some very direct questions also. Okay, now एक query है which I've already discussed, but about these particular news items which are based on, say, politics or what's going on in the world of politics. So sometimes you try to overlook them कि ये तो politics का page है, इसको हटा दो. But when a person in authority, okay, very important authority position, says something, try to see the context of it. Okay, he or she may be talking about something in history which he or she may be critical about, but at least he or she is giving you a hint that you should know the context of it. We can form a question based on the context. All right, a lot of times in UPSC Essentials and UPSC Key, we do mention such contextual headlines which to a general public, general audience look like it's politics. Politics पे question नहीं आएगा. I'm sure it will not ask you. But उसके जो beyond the headlines जो उसका context है वो important हो जाता है. तो ऐसी चीज़ों को आप miss मत करिए. और मैं इसलिए कह रहा हूँ because parliament session, budget session हुआ, उसमें you see a lot of people making comments and talking about, for example, Prime Minister Modi's speech. All right, तो जब speech दे रहे हैं and he's a person on an authority post, okay, it's an important government position. तो वहाँ पे जब वो बात करते हैं about schemes, the past, present, maybe he's critical at times, but you don't have to go into the politics, but you have to understand the polity. You don't have to go in, the government things, but you have to understand the governance. Okay, so you have to not see the historical criticism, but you have to understand the history. So you have to be there, you have to be particular, especially when you're preparing from the prelims point of view. ठीक है, एक particular scheme के बारे में बहुत हल्ला हुई. ठीक है, you thought अरे इसका तो इतना मतलब politics हो रहा है इसका, but you should know who are the beneficiaries of that scheme. What is, how has it performed in the budget or in the past session? So all these things become very important. The vice president, for example, is an important position. So there have been news, all political news say around it. But you should know about the vice president. Now, why he is also the presiding officer in the Rajya Sabha. Okay, so all these things become very important for you to understand. For example, if the president is opening the budget session, okay, if he or she is going and speaking as in my government, the whole speech of the president is my government will do this, my government did that. Have you ever thought why President of India is saying my government? Okay, why the president? It's not any strategy, it's because of its constitutional position. ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप speech सुनेंगे, speech देखेंगे. Okay, now let's just, there's lot to talk, there's lot to tell because this is the first episode of the second season. तो एक तरह से मैंने आपको introduction दिया है. Next episode में हम और specific जाएंगे because I'm sure queries बहुत आने वाली हैं. manas.srivastav@indianexpress.com
ये बस आपको याद रखना है और आपको इस पे अपने क्वेश्चंस भेजने हैं. इसके साथ साथ you will find us on the Telegram also. So UPSC Hub of the Indian Express, Hub यानी HUB, okay, UPSC Hub of the Indian Express. And those who are going to watch us on YouTube, the recorded version, please comment your questions in the box below. This is how I and you will be connected. Okay, this is how I'll get to know you and you'll get to know me. Alright, so Instagram पे तो हमने questions लिए हैं, YouTube पे also. Next episode I will start from the questions which are be there and we will be more theme specific. Alright, now I'll just end up with something which I actually liked a lot, and it is, you know, talking about curiosity, sincerity, and more important, habit. The habit of reading the newspaper, the habit of being a consumer of important relevant news. And the quote is, I quote, "We are what we repeatedly do." हम वो हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं. Excellence then is not an act but a habit. तो जो quality of excellence जो है वो केवल एक act नहीं होता है, वो केवल क्रिया नहीं होती है, it becomes a habit. Newspaper reading, news consumption and understanding a news should be a habit, and it takes not more but almost a 6 week of regular act to become a habit. तो ये बहुत important quote है, इसको ढूंढिएगा ये किसने कहा है. If you already know, you can comment. I'll just repeat and end. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. With this, I'll end up today's session with a promise that next week on Wednesday, 5 p.m., every Wednesday on 5 p.m., we'll be here on Insta Live and YouTube on a recorded version. So that's all for today. And as I say before going, which should be a mantra for all of you, is think smart, work hard, conquer your goal. Bye-bye. Take care.